My name is Himasnshi from Studystation. So our today's topic is percentage. Now before doing percentage, it's important that we need to understand the meaning of the percentage. Now what is percentage? So when we talk about percentage, percentage is a combination of two words, per and cent. So per means out of and cent means 100. So it means when we talk about percentage, so it is the value out of 100. So when I say I got 70%, so what do I mean then? So it means I have got 70 out of 100. When I say I got 85%, it means I'm saying that I have got 85 out of 100. So if we want to find percentage, see here the percentage was already given. So what did I mean when I say कि okay 70% I've got? It means मेरे जो number है वो 70 100 में से 70 number है. If I said 85%, it means मेरे जो marks हैं that is 85 out of 100. कि 100 में से I got 85 number. So now in this case, now how to find percentage? How to find percentage? So to find percentage, it's very easy. So in order to find percentage, so we simply multiply by 100. Let's suppose I need to find, this is 7 and I need to find percentage. So what would be 7 in terms of percentage? So since I need to find percentage, so simply what I will do is I'm going to multiply it by 100. So here my answer is 700%. Let's assume another number. So मेरे पास है 4.5. नाउ 4.5 को मुझे परसेंटेज में करना है. सेम मैं चीज करूंगी दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज 450. एंड हाउ आई गॉट दिस 450? यू हैव टू रिमेंबर, जब भी हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो हमेशा इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड. तो सिंस आई हैव टू zeros, so I will shift one place. So since I have used 1 0 and then 1 0 is still left, अभी भी एक 0 मेरे पास बची है, तो हम क्या करेंगे, उस 0 को as it is copy कर देंगे with that number. So that's how I got 450%. कुछ बच्चों को ये भी डिफिकल्ट लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी आपके पास डेसिमल में नंबर होता है तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 4.5 है. 0.5 like only one digit, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है. इट मींस डिनोमिनेटर में आई बी टेकिंग 10 मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 450%. नाउ दिस वाज अ डेसिमल नंबर. व्हाट इफ आई हैव अ लेट्स से maybe a fraction here. So I have 9/10. So same thing I am going to follow here. 9/10 multiplied by 100. Remember कि ये जो 100 होता है, this is always in the numerator. It is never in the denominator. तो जो आपका denominator है वो numerator से हमेशा divide होता है. तो हमने जब इसे divide किया तो मेरे पास क्या आ गया, 90%. Maybe let's assume मेरे पास है 2/5. ठीक है, it's a non-zero number in the denominator. तो how do we do that? Same thing आपको करनी है. 2/5 multiplied by 100. तो आपको देखना है कि क्या 100 आपका जो डिनोमिनेटर है कि हमें कैंसिल आउट करना है. जहां कैंसिल हो सकता है विल ट्राई टू कैंसिल आउट. तो हमने देखा कि क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. यस वी कैन डू. सो हमने यहाँ पर डिवाइड किया 100 डिवाइडेड बाय 5. सो वी नो दैट इज 20. सो इट मीन्स मेरे पास जो आंसर है यहाँ पर दैट इज 40%. तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं. अब ये बात हुई परसेंटेज निकालने की. अब अगर आपके पास परसेंटेज गिवन होती है तो इन दैट केस, सो व्हाट इफ द परसेंटेज इज गिवन, तो वहां पर हम हमेशा क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी सिंपली डिवाइड बाय 100. हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100. लेट्स अज्यूम मेरे पास गिवन है 40%, राइट. तो 40% अगर आपके पास गिवन है, तो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और मे बी डेसिमल, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 40%. अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब कभी भी आपके पास परसेंटेज है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ 100. तो यहाँ पर 40 आउट ऑफ 100 का मतलब है हमने यहाँ पर कैंसिल किया, हमने फर्दर कैंसिल किया. 4 and 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 2s are 4 and 2 5s are. सो दैट्स वाई मेरे पास क्या है, 2/5. अगर मुझे इसे डेसिमल में करना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, सेम चीज हम करेंगे. कैंसिल हो गया तो दिस इज 0.4. बिकॉज मेरे पास एक 0 है, इट मींस डेसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट होगा. लेट्स कंसिडर वन मोर नंबर. लेट्स से मेरे पास है 25%.
सो 25% का मतलब होता है 25/100. सो इट मीन्स अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगी, दोनों ही 25 के टेबल में आते हैं, आई विल गेट 1/4. एंड 25/100 को अगर मुझे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 zeros है, इट मीन डेसिमल के बाद मैंने यहाँ पर 25 लिखा, तो 1 and 2, इट मीन नाउ आई कैन पुट अ decimal here. So my answer, my decimal number for 25% is 0.25. अब sometimes these two are the whole numbers, but sometimes हमारे पास जो परसेंटेज होती है फ्रैक्शन में भी गिवन होती है. Let's assume I have 8/10%. यहाँ पर बच्चे they get really confused. You have to remember one thing कि जब कभी भी percentage given है, it means जो 100 है, that will always be taken in the denominator. Nothing is going to change no matter what value, what number you have here. So I'm going to write 8/10 as it is, क्योंकि आपके पास percentage है, तो I'm going to take 100 in the denominator. तो अब अगर मैं इसे reduce करती हूँ, I know कि this is 2 4s are and this is 2 5s are, then this is 4 1s are and this is 4 25s are. So it means मेरे पास है 1/125. अगर मुझे डेसिमल में करना है, so same thing 10 into, so I can see there are 3 zeros now. तो हमने 8 लिखा, आपके पास डेसिमल के बाद you have to make sure कि 3 digits होने चाहिए, because हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 zeros है. तो what I'm going to do is, आपके पास एक ही डिजिट है, so 3 digits को कंप्लीट करने के लिए we will put extra 2 zeros. Now this is 0.008. This is my percentage for, I mean a value for 8/10. Let's take another number here. So what if I have 2/4%? यहाँ पर हम क्या करेंगे? Now this is a non-zero number. आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, because it's easy to solve such numbers. So in this case, I'm going to do the same thing. आपने डिनोमिनेटर में आपने zeros लेने हैं, आप इसे reduce करेंगे, 2 1s are 2 and 2 50s are. So I can see that my answer is 50 times 4 is 200. So decimal number फ्रैक्शन तो हमारे पास 1/200 है, तो डेसिमल नंबर क्या होगा? सेम चीज है आपके पास है. सो दिस इज 4 into 100. सो आई नो कि यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 1s are 2 2 2s are. सो आपके पास है 1/200 फॉर नाउ. सो इसको हम डेसिमल में कैसे करते हैं? देयर आर 2 ways. आप इसे चाहे डिवाइड कर सकते हैं, मे बी यू कैन डू लॉन्ग डिविजन, और आप क्या कर सकते हैं कि आपको देखना है कि 200 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आता है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 100 1000 like this. So I know कि 200 के टेबल में 1000 आता है. अब कहाँ पर आता है? 205s are. So it's like solving by making the fractions equal. Equivalent fraction की तरह हम यहाँ पर solve कर रहे हैं. So 200 times 5 gives you 1000, and so it means here my answer is 0.005. I hope this is also clear कि how we convert percentage to fraction or decimal, or if the percentage is given, then how do we solve it? Now let's consider how to find the value of the percentage. Value of the percentage. Now let's suppose we have few chocolates. Let's say I have 50 chocolates here, and my mom said कि okay, you have to give 20% ticket to your brother. आपको 20% जो है आपके ब्रदर को देनी है. इन दैट केस नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट कि 20% मीन्स हाउ मेनी. सो इन दैट केस व्हाट विल हेल्प यू इज how to find value of the percentage. Now in order to find the value of the percentage, what I'm going to do is 20% you have to remember means 20 out of 100, right? 20% of 50, किसका 20% हमें निकालना है? 50 का निकालना है. तो we'll do this. ऑफ जब भी हमारे पास मैथ्स में ऑफ आता है, हमें पता होना चाहिए, इट मीन्स दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन. सो कैंसिल हमें करना है. जहां तक हम कैंसिल कर सकते हैं, अपनी जो कैलकुलेशन है उसे जितना आप सिंपल कर सकते हो आप सिंपल कीजिए. सो आई नो दिस इज 2 times 5 is 10. It means how many chocolates am I going to give to my brother? So 10 chocolates. Let's take another example for better understanding. Here, let's consider I have to find 30% of 207. So same चीज हमें यहाँ पर करनी है. 30% means 30. I know कि 30% means 30 out of 100. Of means multiply 270
30% हमें किसका निकालना है, 270 का निकालना है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, these total values they are always taken in the numerator and that is the reason कि मैं बार बार यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिख रही हूँ, so that आप लोगों को confusion ना हो। So हम यहाँ पर cancel out करेंगे, so I can cancel the zeros like this and I can cancel the zeros। अब हम हमेशा आपको याद रखना है कि जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो जो डिवीजन है वो हमेशा सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की होती है। इट इज नेवर बिटवीन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर एंड इट्स नेवर बिटवीन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट इज ओनली ऑलवेज बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो आफ्टर कैंसलिंग I'm going to multiply 3 and 27, so I know this is so 3 times 27 is 81, so it means 30% of 270 means 81. So 81 is the value of 30%. So that's how we find the value of the percentage. So that's easy. ये हमें value कैसे निकालनी? Now sometimes this is how to find total value of the percentage. समझ आ गई? कभी कभी हमें total value निकालनी होती है. Total value. So in this case, let's suppose I'm taking here an example to explain you better. So यहाँ पर हमें बोला है कि 50% of it is 600. So now there is some value, some number, some random number कि जिसका 50% जो है that is equal to 600. Now we'll do it two ways. Easy हम करेंगे. So let's just break it out. So 50%, like we know कि 50% means 50 out of 100. I told you whenever there is off, it means you have to multiply. It is, I don't know that total number. So here I'm going to consider it, let's say y is equal to, and here 600. So it means 50% of something is equal to 600 and I don't know what that number is. So that for that number we have taken y because that's unknown. So here we have taken a variable. So let's consider now this variable will remain here only. Since this 100 is getting divided here, so when we will change the side, remember जब कभी भी हमारे पास दो साइड्स होती हैं तो हम कभी भी किसी भी ऑपरेशन की साइड चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। लाइक अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पर ऐड हो रहा था तो जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। So 100 now since it is getting divided by से ये डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सिंपल वे में हमें कैंसलिंग करनी है तो I can cancel this. So I know 60 divided by 5 gives us 12. So it means that number is 1200. Now, since it was 50%, the another way was if 50% means half of a number is 600. So it means what would be the double of that number? So the double of that number would be 1200. So that was easy. Or you can maybe use a direct formula. So in that case, what we do is the formula for finding the total value of anything is, so whatever value would be given to you, that would get multiplied by 100 divided by the percentage given. जो भी आपको percentage given होगी, तो जब हम उससे divide कर देते हैं, तो we will always be able to find the total value of the number. I'm going to solve one more question here. So let's say we have a number here, let's say 70% of something of it is, we don't know the number, let's say that is equal to 490 and now we are going to take 70%. 70% means 70 out of 100, of means multiply it, I don't know, so here again I'm going to take a variable, is means is equal to and 490. So here I'm going to keep pi here only. So since 100 is getting divided, it will get multiplied divided by the percentage given. So percentage को हमने solve किया. So this is, so it means the value of that particular number is 700. कि 700 का अगर आप 70% आप निकालेंगे, so that would be equal to 490. Now एक छोटे से helpful trick I would like to give you. So अब ट्रिक कभी कभी हमें डिफिकल्ट हो जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट, हमें नहीं समझ आता है कि कैंसलिंग कैसे होगी. तो फॉर दैट आप हमेशा यू कैन ऑलवेज लर्न द वैल्यूज. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से 20%, तो 20% इज ऑलवेज इक्वल टू 1/5. Now how this 1/5
same. So 20% means 20 out of 100. So if you will reduce it to lowest form, you will see that you will get 1/5. So you can always remember these values. Like for example, when I'm saying 75%, so I know which is 3/4. This helps you to save your time. If I'm saying 50%, so I know that is equal to 1/5. 1/2, I mean. If I'm saying 25%, it means that is equal to 1/4. If I'm saying 30%, it means I'm referring to 3 upon 10. So this becomes easy. Like for example, I need to find something 20% of, let's say 90. So instead of 20%, I can directly write 1/5 of 90. So that टाइम ऑफ सॉल्विंग 20% वो मेरा रिड्यूस हो जाता है, सेव हो जाता है. तो हमने 90 से डिवाइड किया, सो आई नो दैट इज 18. सो इट मीन्स द वैल्यू of 20% is 18. That's how this helps you. I hope this was a helpful video, and now percentage is a bit easier for you all. Thank you.